So if you could remember, in the last lecture we had covered space-time codes, how LMOT scheme was providing us gain, diversity gain, as well as coding gain by orthogonal. Sir. So I was just telling that how LMOT scheme was providing us coding and diversity gain by coding in two orthogonal directions. This we saw in the last lecture. And there we also saw a contrast that LMOT was better than PAM with repetition coding. So here we try to find a design criteria which will come out to be called a determinant criteria for design of any space-time course. So first of all, let us think that we have a code word xi, which could be complex. Its length is L by N, where again L is the number of antennas. There will be number of rows, as in LMOT you could say we assign U1 in the first antenna, U2 in the second antenna, and this was the first time slot. So rows represent the antennas and column they represents the time slot. This was the first time slot, this was the second time slot. So in the first time slot, first antenna sent U1, second antenna sent U2, another symbol. And in the second time slot, the first antenna sent minus U2 conjugate, while the second antenna sent U1 conjugate. So this was one scheme where you have two number of antennas and two slots. This was L is equal to 2 and N is equal to 2. So matrix was L cross 1, and this will be, you can call it a space-time matrix or space-time code matrix, like that. The LMOT scheme was like this. But what was for repetition scheme? If again I have a 2 cross 2 repetition scheme, in repetition scheme, I will just send U symbol from the first antenna, but in the second antenna, first time slot, I will send nothing, because this is the case for repetition. Right? You send one while the other is silent, and then the first is silent and you send the same symbol from the second. This was repetition code. For any diversity code you could apply this, and your code word matrix or your space-time matrix will come out to be the elements only in the diagonal, where one symbol will be repeated L times to get L diversity gain. Similarly, we will be using this fact that the average energy per symbol time will be 1 for all the code words. So we make sure that total energy in one time slot, this is one time slot, the total energy, if you will calculate the energy, it comes out to be 1. So our synchronization will be 1 over N naught. Secondly, we will also assume that the channel coefficients will remain constant for N times, as we assume LMOT, that we are using 2 slots, but the channel coefficients H1 and H2, they were constant. For the first time slot and even the second time slot, they were the same. So we will be assuming that channel coefficients, they remain the same for our N symbol times or N time slots, or the N length of my code. Same equation that we saw in LMOT, it could be written as follows. Y is the output from your N time slots. You can take its transpose as we did earlier also. This is its row column matrix. W is also column matrix. I am writing its transpose here, transpose.
H is already conjugated, so you again take its conjugate. You know, conjugate will go simple number, but it also stands for transpose. You know, H1 H2 was transposed multiplied with the X matrix, which was, you know, U1 U2 U1 U2 conjugate and U1 multiplied with H1 H2 in row form goes with X, and you will get the equations of Y1 and Y2 as we saw earlier for LMOT. So we could have sent any of our code words. For example, if I'm using BPSK with LMOT, I could send U1 U2 as 1 1, or I could send U1 U2 as -1 1. For each different combination of U1 and U2, I will have a different code word. So previously, you know, we had probability of error in deciding, you know, whether XA was sent or XB was sent. Then we said XA vector was sent or XB vector was sent. Now we will say which matrix was sent. Either XA code word was sent, or either XB matrix or code word or space-time matrix was sent. You try to find the error probability in confusing XB with XA when XA is transmitted. Now, if you could just see here that I've just written that same equation here in with more graphical detail. This is y of t, this is h, no transpose, this will become like this. This is your space-time matrix, this is your noise. And once you take this equation, you can see that once you take its edge, this will become 1 cross L, and hence you will get 1 cross n vector after this multiplication. So the error probability in choosing XA and XB actually boils down to what you are receiving here. Here you are receiving a vector, which is you know, this times this 1 cross n. This total will go with this, and again h will go with other. So you will get a vector here. This is also a vector. Vector plus vector, you get this vector. So if I'm sending some matrix, it might correspond to some vector UA. If I am sending some other matrix, it will correspond to some other vector UB. So if I say I can send only 2 matrices or 2 code words, 2 space-time matrices, then in general I can actually get UA or UB. So what is the probability of confusing UA with UB, probability of error, provided UA was sent? So this we have already seen. If you have this vector here UA, which is, let us say, a complex vector, which you know has come out of all of these calculations. So probability of confusing UA with UB is this formula, and we have driven this formula in the previous lectures. Now what is UA? UA will be H times XA. What is UB? It will be H times XB. This equation, this will be XA for some code matrix and XB for some other code matrix. So probability of confusing XA with XB, provided that XA was sent and the channel coefficients are H, will be equal to, just replace U and UB by this term. Now I can put this under root above. This will become 4. 4 over 2, this becomes 2. Then root goes above. This becomes 2. This becomes 1 over n naught. We know that our SNR is 1 over n naught because energy is normalized to 1. This becomes 1 over r over 2. Now this is, you know, mod square. I can always just and this is actually a vector, and it's mod square. So I'm taking the magnitude square of my vector. We know magnitude square of a vector is actually the dot product of the vector with itself.
I can say also this vector, and then this vector again with its Hermitian. This is the dot product. This vector again with Hermitian. This becomes a dot product. This will be 1 cross n. And this will be n cross 1. Because you know this HH is already a row vector. Alright. So I will just take it being a column vector so that I get the dot product which will give me the magnitude. सर हाँ जी सर इसमें हमने अच्छा आपका लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन भी था और छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो मैंने जवाब दिए थे एक ईमेल में लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है व्हाट वाज दैट क्वेश्चन बिफोर यू आस्क दिस न्यू क्वेश्चन सर उसमें एक सेकंड सर मैं ज़रा ईमेल को अच्छा चले मुझे आपको याद नहीं पे छोड़ें पहले अभी इतना टाइम ना जाए आप अभी क्या कह रहे हैं अभी क्या पूछना चाह रहे हैं सर हम एक्स ए और एक्स बी पे स्टैटिक्स अप्लाई नहीं करेंगे स्टैटिक वो सॉरी कॉम्प्लेक्स की जो नोटेशन होती है सर कॉन्जुगेट सर इधर ही जो पहली स्क्रीन थी हाँ सर हमने हार्मिशन कॉन्जुगेट लिया है ना तो ट्रांसपोज लेके उसका ऑर्डर तो हमने चेंज कर दिया है लेकिन उस पर कॉम्प्लेक्स अप्लाई नहीं करेंगे सब पे करेंगे बिल्कुल करेंगे लेकिन सर इधर एक्स ए एक्स बी तो वैसे ही लिखे होंगे नहीं वो आएंगे वो भी आएंगे ठीक है ना ये है ना एच यहाँ शुरू में नहीं था ना ठीक है ना तो इसको मैंने एज इट इज लिखा ये अब एक आपको पता है कि इसका साइज जो है क्या ये एल क्रॉस एन था और इसका साइज आपको पता है कि इट्स साइज इज यू नो 1 cross L. This is L cross N. So total size is 1 cross N. So 1 cross N means it is already a row. Okay, it is a row vector. This has to be a column vector. So I have to take its dot product. So I have to take its H, its Hermitian. Okay, because they are complex numbers, so I have to take transpose as well as complex number. That is why they are represented by H. This comes as same. But when you will take its H, so what will happen? This will go here and this will come here. H times H, this will just become H, and this H will be here. You can see its Hermitian is being taken. Hermitian of the space-time matrix. The difference of space-time is being taken. सर बट हमने कॉन्जुगेट तो लिया नहीं एक्स ए और एक्स बी का ऊपर स्टैटिक तो शो नहीं ये हर्मिशियन लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने हर्मिशियन लिखा हुआ है ना अच्छा आप बुक से कंफ्यूज करना चाह रहे हैं हाँ बुक ने यहाँ पे हर्मिशियन वो कॉन्जुगेट लिखा हुआ है और मैंने अपने नोट्स में एच लिखा हुआ है वैसे इसने कॉन्जुगेट लिखा अमूमन कॉन्जुगेट होता है सिर्फ कॉन्जुगेट के लिए तो मैट्रिसेस में वैसे जो जनरल रूल चल रहा है वो एच का ही होता है हर्मिशियन का मतलब दो चीज़ होती है ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेशन भी तो मेरे नोट्स में एच हुआ हुआ है ठीक है सर मैं एग्जाम में आप जो भी यूज़ कर लें मगर बेहतर है मेरा वाला यूज़ करें वैसे वो क्वेश्चन मुझे मिल गया है जो मैंने पूछा था अगर आप कहते हैं तो लास्ट लेक्चर के लास्ट में पूछना तो या भी पूछ लेता हूँ सर अच्छा चलिए लास्ट में पूछ लें चलिए ठीक है मैं लास्ट पूछ लेता हूँ all right so we are at this point now we can go to the book so we are at this point now this matrix is inside XXZ this you know is actually Hermitian matrix अच्छा हाँ जी any question no sir मैं क्या ये आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है हाँ वही कह रहे हैं so you can see this is a Hermitian matrix because you have the same matrix multiply with its conjugate then you will always get a Hermitian matrix because once you take its conjugate you will get the same vector okay? That is why this is called a Hermitian matrix as written here so a Hermitian matrix you know it is you can take its eigenvalues and all that as your friend is saying so I can write this as you know the vector with all the eigenvectors this is the eigenvalue and this is the eigenvector matrix this I will apply the eigen हार्मिशन है जो पॉइंटेड 9 है उसमें सिमेट्रिक हार्मिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है हाँ जी नहीं सिमेट्रिक हार्मिशन नहीं हर्मिशियन की डेफिनेशन लिखी है ना क्योंकि सर सिमेट्रिक में ये होता है ना कि अगर वो
उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज माइनस आ जाए तो स्क्यू हार्मिशन हो जाता है। अच्छा, हम तो हर्मिशियन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन है तो इसकी ये डेफिनेशन है कि आप उसका हर्मिशियन लेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। जितने जी भी कोरिलेशन मैट्रिक्स होते हैं वो यही होते हैं इस तरह से कि आप उनका कॉन्जुगेट लें तो दोबारा वही आ जाते हैं आपके पास। उसी को हम हर्मिशियन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आप हर्मिशियन लें, यानी यहाँ पे एच है, इसका मतलब एच लेंगे दोबारा वही मैट्रिक्स है तो उसको हम कहते हैं हर्मिशियन। वो देख लें मजीद की डेफिनेशन सिमेट्रिक तो जी सर, वैसे वो ही बुक होते में हैं। जस्ट नोटेशन से वो कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, वो नोटेशन हाँ एच से स्टेरिक, ठीक है हाँ, ये सर। एच है, एच है, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस एज दिस, ये भी यू, ये और ये जो भी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है ये भी यू ऑफ एच है इसका मतलब। हाँ, ये यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, हमें पता है। इसमें सारे कॉलम्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं इसके आइगन वेक्टर्स के। ये आइगन वैल्यूज होती है, सिर्फ डायगोनल पे रखी होती है। So remember that these eigenvalues will be squared. Why will be squared? Because one eigenvalue corresponds to eigenvalue of xa minus xb. But because there are two, they are product of two Hermitian matrices. Alright. So that is why the eigenvalues will be squared. So we can write them as square, where single is the eigenvalue of the single matrix, but because they are doubles, they will be square. Acha, we can write it like this. Again, the steps are missing. So you can see from here that alright, we first of all orthogonalize our matrix like this. So we have H and H. Remember that H is 1 cross L. This is L cross L. Alright. Because if you could see that the matrix that you were working on, this matrix, what was the size of this matrix? This was actually L cross N, and this was N cross L. The total matrix was still L cross L. So if it is L cross L, all the eigenvectors and all the eigenvalue matrices, eigenvalue matrix and the the unitary matrix containing all the eigenvectors, they will be of size L cross L. So this is L cross L cross L. All right. So I multiply this 1 cross L with L cross L, so I will get 1 cross L. All right. This is 1 cross L. Where what is happening that each H will go with one eigenvector like this, and this will become a 1 cross L. There is no plus sign between, they are just H is a vector, Q1 is a vector, and this gives you one number. Then H with Q2, and so on and so forth until you know HL with QL. This is again the eigenvalue matrix. Again, this will be multiplied as such. So every row will have Q1, single Q, Q2. Every Q1 will go with H, then Q2 will go with H, and so on and so forth. You will again get numbers in this fashion. Sizes you can always calculate by applying. This will be L cross 1 matrix. Then I multiply these two. This will be 1 cross L eigen matrix. This will go with this. So only lambda 1 will be multiplied with this, or lambda 1 square. Then this will go with second, with lambda 2 square multiplied. यहाँ पे lambda 2 square होगा, गलती होगी, up till going up to lambda L square. Then this vector will be multiplied with this vector 1 cross L cross. Now I will get a number. This multiplication, this H will go with this H. यहाँ मैंने कॉन्जुगेशन लिख दी है, तो अब आपने H लिखना तो वो कैपिटल H भी ठीक है। यहाँ कॉन्जुगेशन जगह कम थी, मैंने छोटा करने के लिए कॉन्जुगेशन लिखी है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स का साइन लिखा है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का वही मतलब है कि ये H है। H का मतलब है आप कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं और ट्रांसपोज भी ले रहे हैं। सो HQ1 lambda 1 square times Q1 H and this H, or Q1 complex H. So like this. This is repeated for all other products for any value of L going from L1 to capital L.
So you have any H conjugate QL multiplied with again the same number, but this number is actually nothing but this same number, but only its conjugation. So I can write this number, and this is actually conjugation of the same number. This number and same number conjugation means number and its conjugate means I am taking its mod square. Right? Just like a plus b, a plus jb into a minus jb is equal to under root a square plus b square. So and this is just a dot product. I can also write this first, and then QL conjugate or Hermitian with H, the same thing will come because they are just the dot product. And then I can say that this QL conjugation with H gives me another so give me one number, so that number is HL tilde. So I can replace all of that by this factor. So I replace all of that by this factor. So HL, which we know is actually nothing but different Q's with H. So that will also be really, because you can see U is a unitary matrix and it would not change the fading coefficients of H. They will remain the same because you are multiplying a unitary vector. So the statistics of the distribution remains the same. Now we can find the this will be the probability, but we can solve this as we have solved it earlier. First you will say that this will be less than e minus x square over 2, take it square, this will become over 4, and then you will say that this is approximated by 1 minus we have learned earlier 1 minus s of x. So all of this factor without this h, after this under root has already gone away with this with 4, this s and r and this lambda and this sigma, this will come here. As you could remember, we did previously also there when we were studying rotational codes like this. So we first wanted the q of x is less than the e minus x square, so we took x square. Then we said that every one of them is really, so I can separate them, they're independent, and then I applied this property and I could say that this will be equal to this times a square. H1 and H2 goes away, and the rest of the values they come with 1 minus this thing. The same thing is happening for every number of L there. In rotational you had 2, but here you have L diversity paths, so for every other path you will have 1 plus S and R lambda L square over 4. Right? Now if we say that all these lambda squares are positive, so you can see that if one is neglected, this will become SNR to the power L, so you will be getting a gain of SNR, diversity gain of L, as well as for this goes above, so you will also be getting a coding gain that will be determined by the products of lambda L's. सवेरा को बताओ, अम्मी को बताओ, सवेरा को बताओ. So what I was saying,
All right. So you know, for larger SNR, this becomes like this: SNR to the power L, and product of all these lambdas. All right. Now we know that very important rule in eigenvalue analysis, that product of the eigenvalues is actually equal to the determinant of the matrix whose eigenvalues have been found. So these values were found of this matrix. So this product can be also written as determinant of this matrix. All right. See, it is also giving me a diversity gain of L, as well as the coding gain is being determined by this determinant. So this was between from XA to XB, that you know there could be also error, let us say from XA to XC and XA to all that. And so finally it will be depending upon the minimum value of between any two code words. Between any two code words, XA, XB, XA, XC or XA, XD, and then I take the terminal, whatever the minimum value, that will determine the error between XA and XB, and that will determine the coding gain as well as the error, and this is called the determinant criteria. In a special case, when you have time diversity code, that space-time matrix, you are applying a time diversity code. This means you are just sending over the diagonal, as we just saw. Space-time code are diagonal, as we just saw, right? In that case, you can very well see that what will be happening here. Only the difference will come in the diagonal. Rest of them will all be zero, because XA and XB will be just in the diagonal. So only their differences will come. And yes, their differences will be squared up, and then they will be multiplied. So each product, you just multiply two matrices, all right, with their elements only along the diagonals. So their diagonal will be squared up. All right. So one difference is DL double, this will become DL mod square. This will also be for us, this is lambda L square, so there is square error, you can just correct it. So you can very well see that for time diversity codes, we are getting this or we are getting this, but we are getting a product of the different distances, and that was the same thing that we saw in rotational code. We got the squared product distance, and here we are also getting the product distance, but this will be of L times, there it was 2 times. The criteria boils down to the same criteria that we studied for rotational codes for space-time matrices, applying time diversity code words. So we would like to compare LMOT with the repetition scheme. Assume that LMOT is BPSK +1 -1, or it could be +1 +1 -1 -1, or -1 +1. So first of all, find its minimum determinant. So first of all, we want to find this determinant for LMOT. So let us go to our notes. Points are missing here. Please try to understand it thoroughly. So we have LMOT scheme with these symbols. If I choose symbols to be 1 1, this will be the code word. If I choose first symbol to be 1 and second symbol to be -1, then it will be 1 -1 -1 minus conjugate will be +1, and 1 conjugate will be 1. Alright. This will be the second symbol or the second code word of my BPSK over LMOT.
third code word will be corresponding to -1 1 and fourth code word will correspond to -1 and -1. Hence I will get these 4 different code words. So next thing, we have to normalize the energy. We know that the average energy for BPSK is, हाँ जी, any question? सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ, कि हम अपना पिछला भी हर पूछना चलें, अगर आपको याद ही है तो फ्रेश ही हो जाएंगे। हाँ जी, पिछला क्या था आप वो भी पूछ लें। सर हर मॉड्यूलेशन स्कीम के एंड पे हम उसको बीपीएस के से रिलेट करते हैं, वो चाहे एसएनआर रेशियो हो, वो चाहे कोड सिंबल्स हो। इसकी क्या वजह सर? तो उसको एज अ स्टैंडर्ड हमने माना हुआ है बीपीएस के को। नहीं, मॉड्यूलेशन स्कीम तो है ही बीपीएस के। नो ये सर, जो जैसे टाइम डाइवर्सिटी। LMOT वगैरह तो कोडिंग स्कीम है ना, या रोटेशनल अच्छा, कोड्स थे। ये तो आपने उसको अक्लमंदी से उन सिंबल्स को कैसे प्लेस करना है स्पेस में और टाइम में। मॉड्यूलेशन तो पीछे से हो रही है, मसलन आप चाहें तो पैम यूज़ करें, चाहे तो बीपीएस के यूज़ करें या क्यूपीएस के यूज़ करें। बीपीएस के ऐसे कि बीपीएस के आसान होता है ना, सबसे सिंपल तो बीपीएस के ही है, इससे सिंपल तो होने से रहा। सर यूज़ भी यही मैक्सिमम किया जा रहा है सर बीपीएस नहीं के। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीपीएस के तो इतना नहीं यूज़ किया जा रहा है, इतना दूर कॉम यूज़ किया जा रहा है ज़्यादातर, 64 कॉम वगैरह, उनकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, ज़्यादा आप भेज सकते हैं डेटा। अच्छा खैर, सो मैं क्या कह रहा था, अभी तो हम बीपीएस की सिंपल है, समझना आसान है, आगे जाके आप रिसर्च में जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें। अच्छा, तो देखिए ना, बीपीएस के में आपको पता है एवरेज एनर्जी क्या थी, A²/N0। यस सर। ठीक है ना, ये हमने बहुत दफा देखा। सिंबल ने जाना क्या है, सिंबल ने जाना ए जाना है या -A या +A, तो पावर क्या होगी उसकी A² होगी। ठीक होगी, तो सिग्नल टू नॉइस पावर क्या हो जाएगी, A²/N0 हो जाएगी। अगर आप कहते नहीं कि मैंने ना उस टाइम स्लॉट में मेरी एनर्जी कितनी है, तो वो फिर A² है। तो आप चाहते हैं कि उस टाइम स्लॉट में जो आपकी एनर्जी वो 1 हो, वो A² ना हो। अच्छा ठीक है, if you want it to be 1, then you have to normalize by A². Now what is the energy in one time? Remember, the energy that will be calculated will be the total energy that is being sent by both the antennas. In one time slot, 2 symbols are being sent, so the energy is actually 2A². ये N0 वैसे ही लिख दिया SNR की वजह से आप लोग समझाने के लिए, वैसे तो सिंबल की एनर्जी की बात हो रही, तो सिंबल एनर्जी इज एक्चुअली 2A². all right, and we know that now my A is just 1 and -1, so A will be just A² will be just 1. So I need to normalize my energy with respect to power by 2A², or in other words by 2, 1/2. But this is, this is power, okay, or energy in one time slot. But what will be the change in the magnitude? What will be the change in the magnitude? The change in the magnitude will be just divided by 1/√2, right? Because power is square of the magnitude. So what we will do, we will normalize all our 4 code words by 1/√2. Very, very important step. Many students, they make mistakes in creating normalized code words of any modulation scheme over any space-time coding. So देखें, मैंने सबको नॉर्मलाइज कर दिया √2 से। अच्छा, वंस दे आर सर लेकिन नॉर्मलाइज। अच्छा, ऊपर तो सर आपने 2 से किया हुआ है डिनोमिनेटर में नॉर्मलाइज। कहाँ 2 से किया हुआ है? सर ये वाला स्टेप, ये लास्ट स्टेप आपको सर। समझाने के लिए कह रहे हैं ना, अल्लाह के बंदे, करना तो 1/2 अंडर रूट से ही करेंगे ना। जी। ये तो आपको समझा रहा हूँ कि ड्राइव क्यों हुआ, ताकि जब चेंज हो एग्जाम में तो आप कर तो सकें। नो सर, इससे पिछला स्टेप जहाँ हमने लिखा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, 2 पर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये पावर के हिसाब से हो रहा था ना, अल्लाह के सिग्नल टू नॉइज रेशियो को नॉर्मलाइज करने के लिए तो आप बताएंगे 2 से कर रहे हैं, मगर जब कोड वर्ड में तो एम्पलीट्यूड्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपने √2 से करना है। ये तो बता रहे हैं ना आपको कि भाई वो कैसे ड्राइव हुआ 1/√2। वो ऐसे डिवाइड हुआ कि टोटल पावर जो बनती है उससे आपने
उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, टोटल पावर को टोटल पावर, ताकि वो फिर 1 हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। जी मगर जी। वो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड में तो 1/√2 का, सिंबल में तो एम्पलीट्यूड लिखी हुई, पावर नहीं लिखी हुई ना। यस सर। सारी एम्पलीट्यूड्स को √2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, बाद में हमने बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है LMOT scheme with BPS के सिंबल्स, ठीक है, द मिनिमम डिटर्मिनेंट इज 4। अब आपने मिनिमम डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो कह रहे हैं जी 4 आता है। अच्छी जगह जी कोशिश करते निकाल, यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंस यूज कर लें। देखिए ना, A1 जो है वो किससे बना है, A1 बन रहा है 1 1 से, तो A2 बन रहा है 1 1, इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, इस पे चांस है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए। अगर आप 1 1 को 4 से करेंगे तो जाहिर है काफ़ी हैवी डिफरेंस मिलेगा आप। ठीक है, तो मैंने कहा मिनिमम डिटरमिनेंट बजाय कि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, पहले मैं सिर्फ 1 और 2 को क्यों ना ट्राई कर लूँ, इनमें मुझे लग भी रहा है कि सिर्फ एक का फ़र्क है, तो डिफरेंस भी मेरे पास मिनिमम आएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, XA1 को उठा लो और XA को उठा लो, दोनों का डिफरेंस लो। ठीक है जी, तो नॉर्मलाइज करने के बाद ये याद रखें, सो आई हैव फाउंड द difference comes out to be like this. Then I take its Hermitian, in Hermitian what happens, rows becomes a column, the column becomes the rows. All right, and then you also have interchanging, मतलब वैसे तो यहाँ 2 क्रॉस 2 में मसला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये दोनों आपस में ऐसे करके चेंज हो जाएंगे। अगर आपने वैसे देखना है तो फिर ये होगा कि आपने इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, तो ये पूरा रो कॉलम बन गया और ये जो पूरा रो था वो भी कॉलम बन गया। जिस तरह मर्जी है, आपको ज़्यादा पता है आप कर सकते हैं इसका हर्मिशन काम। यहाँ पे हर्मिशन तो कॉन्जुगेशन तो हो गई, चूँकि सारे रियल हैं, वो यहाँ पे ट्रांसपोज काम कर रही है, ट्रांसपोज ले लिया आपने, आप पहले डिफरेंस लिया, उसी का ट्रांसपोज लिया, उन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करें आप। जो मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये कुछ आ गया, ये इसके साथ जाएगा, -2 +4 हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, 0 मिलेगा, ये 0 देगा, ये वाला जब इसके साथ ये वाला जो है और जब इसके साथ जाएगा तो फिर आपको 4 मिल जाएगा। आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकाल लिया। अब इस पूरे का आपने डिटरमिनेंट ले लिया। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं जी, उसमें याद है कि डिटरमिनेंट लेने से पहले आपने क्या करना है कि इसको ना अंदर ले जाना है, इसको बाहर नहीं रखना, वरना ये प्रॉब्लम करेगा। डिटरमिनेंट जो है पूरे मैट्रिक्स का, तो पहले इसको पूरे प्रॉपर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बना लें। ये हो जाएगा 2 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 वो 2 2 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 2 के बाद अब उसका डिटरमिनेंट लेना। डिटरमिनेंट का सिंपली क्या होगा, दिस माइनस दिस, सो 2 to the 4, 4 इसका जवाब आ गया। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट 4 आया था। अगर मैं 1 और 4 का डिटरमिनेंट निकालूं इसी वजह से मैंने पहले निकाला, तो ये 16 आएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि आना भी चाहिए 16, चूँकि मतलब ज़्यादा आना चाहिए, चूँकि डिफरेंस यहाँ पे अच्छा खासा है, दोनों बिट्स। इस वजह से नॉर्मल प्रोसीजर ये कि आप सबके डिफरेंस निकालें। अभी तो आपने A1 का निकाला A2 के साथ और A1 का निकाला A4 के साथ, मगर आपको A1 का A3 के साथ भी निकालें, A2 का A3 के साथ निकाल लें और A2 का A4 के साथ भी निकाल लें, इस तरह से A3 का A4, यही सारे डिफरेंस आ जाएंगे आपको। So once you find the difference, the minimum determinant will be the determining factor, and we saw the determining factor comes out to be 4. अब सवाल है कि जी पैम मैं यूज़ करूँ, अगर रेपिटेशन स्कीम में 4 पैम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट कितना आएगा, वो भी करके देख लेते हैं। अब इसमें कैसे करना है आपने, आप देखें भाई, पहले तो पैम के सिंबल्स बनाए, फिर उन सिंबल्स के कोड वर्ड्स बनाए। वहाँ पे ख्याल रखें अगर एक सिंबल है उसी को रिपीट करना पड़ेगा, ये रिपीटेशन कोड ही है, और यहाँ पे सारे एंटेना साइलेंट होंगे। उसके आपने 4 सिंबल्स बना दिए। फिर अब देखें कि इसकी एनर्जी को नॉर्मलाइज कैसे करना। पहले इसकी एवरेज एनर्जी, वहाँ पे देखें 2a² था, यहाँ 5b² है, तो 5b² के अंडर रूट से आपने डिवाइड करना है, जैसे वहाँ पे आपने 2a² के अंडर रूट से डिवाइड किया था। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे बीबी की टर्म, वहाँ पे अगर ए की टर्म्स में लिखा है तो वहाँ भी आपको फिर करना पड़ेगा अंडर रूट 2a से। यहाँ चूंकि बीबी की टर्म्स में
मैं थोड़ा और ज़्यादा चेंज कर दिया, ठीक है, अब √5b से डिवाइड करेंगे, इस पूरी एवरेज एनर्जी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब आपके ये नए कोड्स वर्ड बन गए। ये है नॉर्मलाइज कोड वर्ड्स, ये बनाने ज़रूरी हैं, इसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। आप फिर इनके डिफरेंस ले लें, यहाँ फिर मैं कहता हूँ लॉजिक यूज़ कर लें, थोड़ा सा देख लें कि कहाँ पे डिफरेंस जो है आपका मिनिमम होगा, तो बंदा वो वाला यूज़ करे, बजाय कि सारे कॉम्बिनेशन निकालता फिरे। तो नज़र आ रहा है कि जैसे आप अगर इन दोनों का लेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं है, इन दो कोड वर्ड्स में ही 2b का चेंज, 2b का चेंज है। अगर आपने फर्ज करें ये और ये उठा लिया या ये और ये उठाया, फिर तो आप मारे गए और 6b का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 4b का डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई छोटा डिफरेंस है ताकि आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया बाहर निकल आए। ये एग्जाम्पल ही भी 1 और 2 के लिए वो इंटेलिजेंटली सिलेक्ट कर लिया, मैंने माइनस कर लिया, माइनस से कॉमन निकाला, ये आ गया, फिर इनको ऐड कर लिया तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास डिफरेंस आया। आप इस डिफरेंस को क्या करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना इसके हर्मिशन के साथ। सो हर्मिशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है आपको, डिटरमिनेंट लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 16/25। सो यू कैन सी हियर it comes out to be 16/25. The minimum comes out to be 16/25. सर हाँ जी सर, ये एक दफ़ा रिपीट कर दें, √5b और √2a, जो ये चीज़ें नॉर्मलाइज करते हो, ये किस तरह आएंगे? आपने इसकी एवरेज एनर्जी निकालनी ना, देखिए ना यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम स्लॉट पे आप कितने पैम सिंबल्स भेज रहे हैं? 2 सर। 2 नहीं भेज 1 रहे, सर। मैं दूसरा तो 0 है, जी 1 भेज रहे हैं ना। ठीक है सर, अच्छा 1 हाँ, जो स्टूडेंट गलती पहले ही बता दूं, एग्जाम में बहुत दफ़ा आए सवाल, कुछ ऐसी भी है ना कि आप, मैं कहूँ कि नहीं जी आपने 4 पैम को एलएमयूटी में डालना है, वहां पे तो फिर यहाँ पे भी फिर आएगा ना, एलएमयूटी में -3 भी, यहाँ पे बी भी हो सकता है, फिर यहाँ पे -b भी हो जाता है, यहाँ +3 भी, तो वहां पे फिर एवरेज पावर 5b नहीं होगी, वहां पे एवरेज पावर 10b² होगी। यहाँ पे इसलिए 5b² है कि अगला तो 0 है, तो एक ही की पावर इस्तेमाल हो रही, तो एक ही की एवरेज आएगी, एवरेज तो 5b² है, क्यों हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए 5b² के अंडर रूट से डिवाइड करना है। अगर डबल है तो फिर डबल की एवरेज लेनी है आपने, ये नहीं कि सिंगल, डबल है तो सिंगल चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। जो इनकी टोटल एवरेज पावर होगी उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करना है सारे सिंबल्स को। सर, अगर 2 में आता है तो हम डायगोनल वाइज इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऑफ डायगोनल वाइज, जिसका -3b है, और एक और अगर एलिमेंट हम ले लेते हैं? वो फिर डायगोनल थोड़ी होगा ना, वो तो अगर एलएमयूटी फर्ज करें आपने पढ़ा है अभी, एलएमयूटी में तो यहाँ भी सिंबल है, यहाँ भी सिंबल होगा ना, जी जी सर। फिर आप वो सिंबल डालें यहाँ पे, फिर इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, 2 पैम सिंबल्स की एनर्जी तो 10b² हो जाएगी, तो आप डिवाइड करेंगे अंडर रूट 10b² से। सर, इसमें 2x2 में मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स तक हम कर सकते हैं ना, साइज के अकॉर्डिंग? यानी अगर इसे 3 में हमने जाना तो ऑर्डर ज़्यादा करना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर, ठीक है, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। ओके। अच्छा अभी देखिए ना, इधर आया 4, इधर आया 16, तो गेन किसका ज्यादा हुआ? गेन इसका ज्यादा। ये चीजें कहाँ होती है? ये होती है सारी डिनोमिनेटर नीचे की तरफ रखी होती है ना, डिनोमिनेटर, जितनी ये ज्यादा होंगी उतना इनका कोडिंग गेन ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा होगा, जितने ये नीचे हैं और जितने ये ज्यादा होंगे उतना एरर प्रोबेबिलिटी को ये टाइटली बाउंड करेंगे। तो इनको कंपेयर करने के आप कहेंगे 4 डिवाइडेड बाय 16/25, 25 ऊपर चला गया, 100 डिवाइड बाय 16 तकरीबन 6 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब 6 टाइम वो ज्यादा गेन दे रहा है। एलएमयूटी का कोडिंग गेन 6 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू रिपीटेशन स्कीम।
यही बता रहा है इसका फायदा क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया था कि इसने दो ऑर्थोगोनल चैनल्स बना दिए, दो पाथ्स बना दिए, जबकि इन reputation you had only one path. All right, now we come to MIMO. So consider that we have a MIMO channel. MIMO means multiple input, multiple output. So now we have two transmit antennas and we have two receive antennas. In previous we were having two transmit and one receive. Now we are having two transmit and two receive. So you know, MISO was for 3G and MIMO become the standard technology for 4Gs. So we define the channel coefficient. अब आप देखिए ना, दो एंटेना है, दो हैं, तो आपके पास चार चैनल कोफिशिएंट्स हो गए ना, 1 1 1 2 2 1 2 2. Alright, so Hij is the channel gain from transmit antenna J to receive antenna I. यानी अगर मैं कहूँगा ना H1, इसका मतलब वन एंटेना को रिसीव हुआ फ्रॉम वन एंटेना. अब 1 2 एंटेना रिसीवर में भी है और 1 2 एंटेना आपके ट्रांसमीटर में भी है. So first of all, we assume that all these HIs, they are independent of one another. All right, so we are sufficiently far apart, antennas are far apart, and the gains of one antenna to 1 and 2 of the receive, and the second antenna to 1 and 2 of the receive, the fourth channel going, they are independent of one another. So if there are 4 independent fading paths, this means your L is equal to 4. You must get a diversity gain of 4. So what gain I am getting? Let us try to find. First I apply repetition over LMUT. Alright, very good. So I do the same thing. I send the first symbol from the first antenna and I will send the thing from the second antenna. Then I will send the first symbol from the second antenna and I will send nothing from the first antenna. So what I will be getting? At time 1, Y1, so I will be getting 1 1 and 2 1. I 1 1 means H coefficient at the first antenna, alright, so you can see here Y1 will be equal to H11, meaning receiving at 1 when send was 1, then Y1 will also be Y2, signal received at the second will be equal to H21, receiver to sender 1, and this will be just 1 and 2 being sent across two channels. Similarly, in second time slot, you will have YI2, that will be given as follows. This will be H12, received at 1, send at 2, H21, receive at 2 and send at 1. सर हाँ जी, एक चीज़ समझ नहीं आई सर, जब आप टाइम स्लॉट कह रहे हैं इसका मतलब वो स्लॉट है जिसके बाद इनपुट सिग्नल रिसीवर पे रिसीव होगा, टाइम स्लॉट यानी मैंने वो कहा गैस. आपने सवाल भी पूछा था, तो मैंने आपको ईमेल भी किया था कि इसका यूजर को जो आपने टाइम दिया ना, अब देखिए ना, आपने U1 U2 दो भेजे ना सिंबल्स, वो आपके सिंबल्स है ना, आपके यूजर के जी, और वो फिर आपने रिपीट भी किया, तो आपने इसलिए 2 स्लॉट्स दिए ना उसको, देखिए वो अपना मीन्स डेटा जो है उसमें भेज सके. अब मीन्स किसी के यूजर सर. को आप जी,
मैं जितनी कॉपीज इनपुट सिग्नल की भेजूंगा उतनी मेरी टाइम स्लॉट्स बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, अगर आप कुछ सादा कर रहे हैं तो उस इस चीज़ केस को में अंडरस्टैंड नहीं हो रही टर्म, जब टाइम स्लॉट बोली जाती है तो उसका मतलब ये है कि मैंने ट्रांसमिट कर दिया है सिग्नल, तो अगर मैं दोबारा कॉपीज़ की भेजता हूँ तो वो सेकंड टाइम स्लॉट में भेजूंगा। हाँ, आप सेकेंड में भेजें या आप 10th में भेजें तो आपकी मर्जी। ठीक, और सर सारी इंडिपेंडेंट होंगी टाइम स्लॉट्स, यानी कोई इनमें डिपेंडेंसी नहीं होगी। अच्छा, टाइम स्लॉट की डिपेंडेंसी से आपका क्या मुराद है? वो तो फिक्स है सर ना स्लॉट्स हर एक की। आप फर्स्ट सेकंड, 2-2 सेकंड, 1-1 सेकंड, माइक्रो सेकंड में होगा, मिली सेकंड में, तो हर एक की स्लॉट्स फिक्स हैं हर हर यूज़र की। सर मतलब मैं साइमल्टेनियस भी भेज सकता हूँ, मतलब मैं एक ही वक्त में अगर नहीं, एक एंटेना तो एक का भेजेगा ना, एक यूज़र का। हाँ, अगर आप और दूसरे एंटेना से और किसी और का भेज दें, जी सर, मगर यानी एक दोनों वक्त में एंटीना से जी बैक वक्त मैं वो अभी हम रिसीव। पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक में भेजें, दूसरे को साइलेंट कर दें। ठीक ठीक है ना? ठीक है सर, मैं हम समझ। रेपुटेशन को लगा रहे हैं 2x2 पे। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो सिग्नल है ये 2 दफ़ा आएगा, 2 डिफरेंट एच से आएगा। ये सिग्नल जो आपके सेकंड टाइम स्लॉट में दोनों एंटेना में वो भी 2 दफ़ा आएगा। हर के साथ जो एच है वो डिफरेंट है, इसका मतलब आप 4 का गेन तो ले सकते हैं पक्का। सही। ठीक है, 4 डाइवर्सिटी गेन आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारे एच 4 हैं और चारों इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि नुकसान क्या है इसका। नुकसान ये वही चीज़ है कि जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने बहुत ही पुअर यूटिलाइज की है। ये कि कैसे इसको यूटिलाइज किया गया है पुअरली। So we can see that because we are just sending one symbol, other antenna is silent, so you are wasting the resource there. While LMOT is better because it is sending two symbols in both from both the antennas over 2 time slots. So LMOT is actually sending one symbol per time slot, while this is actually sending one symbol per 2 time slot repetition coding. So repetition coding is quite wasteful of degrees of freedom. सर मीन्स कि एलुमोटी में जस्ट एक टाइम स्लॉट एग्जिस्ट करेगी। नहीं, टाइम स्लॉट्स तो पता नहीं इन्फिनिट होंगी। मैं सिर्फ ये कह जी रहा हूँ सर, कि जो अगर उसका हम स्पेस साइलेंट टाइम, जी अगर हम अगर एंटीनास को उसका साइलेंट नहीं करें जी। एंटीना को साइलेंट करने की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि सिग्नल प्रोसेसिंग की टर्म्स में बात करें ना। सो यू कैन सी दैट इन एलएमओटी देखिए ना, आपने पहले U1 U2 भेजा, फिर आपने दोबारा U2 U1 को घुमा फिरा के भेजा। ठीक। रिजल्ट क्या बना कि वो आपने एक स्लॉट में U1 U2 भेजा, अगले स्लॉट में U2 भेजा, तो दोनों स्लॉट्स से आपकी कॉम्बिनेशन करने के बाद आपके पास U1 U2 दोनों निकल आए। तो यही हुआ ना कि आपने 2 टाइम स्लॉट्स में 2 सिंबल्स निकाल लिए, यानी हर स्लॉट में एक सिंबल निकाल रहे हैं आप, जबकि जी वहां पे आप 2 में एक निकाल रहे हैं। ठीक है सर जी। ठीक है, और इधर आपने देखा कि बड़ा ख़राब था, मगर आपको ये 4 का गेन दे रहा था, डाइवर्सिटी गेन। ये भी आपको 4 का डाइवर्सिटी गेन देगा, तो ना सिर्फ 4 का डाइवर्सिटी गेन दे रहा है, बल्कि इस क्लास की डेटा रेट ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर डेटा रेट ऑफ रेपुटेशन स्कीम। अच्छा, अब सवाल ये, क्या LMOT is the best scheme? Is it utilizing all degrees of freedom of the 2x2 channel? How many degrees of freedom there are in the 2x2 channel? अब हमने क्या देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होते क्या, दे आर एक्चुअली डायमेंशन ऑफ द रिसीव सिग्नल। सो अगर आपके पास 1 रिसीव एंटेना है फिर तो ठीक है, आपके पास सिर्फ 1 ही है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट if you have 2 receive signals, you can receive 2 signals, 2 different signals, so you have 2 degree of freedom. So LMOT, for one antenna LMOT is very good because it is utilizing full degree of freedom, but for 2 antennas you are still getting one symbol output, so it is not fully utilizing the degrees of freedom for 2x2. आपके सवाल का जवाब हो गया है ना?
वो जो आपने लंबा चौड़ा पूछा हुआ है। हाँ जी सलीम साहब, हैव यू गॉट द आंसर फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन इन द ईमेल? यस सर। चलिए अब देखें, अब वो कह रहा है कि जी ये तो हो गया ना एलएमटी वाला जो माइजो का। अब जो साइमो हमने पढ़ा था उसमें आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, वहाँ पे हमने कहा था एक ट्रांसमिट है, एल आपके पास रिसीव है, रिसीव एंटेनाज है। ठीक है, डेटा आपका इस तरह का था कि वाई बी एल क्रॉस वन, सारे एल क्रॉस वन है, और सिग्नल सिर्फ एक है मगर वो एल एंटेनाज में जाने से एल टाइम्स रिपीट हो जाता है, तो उसमें एल क्रॉस वन की एरे लगी। ठीक है, सो जो सिग्नल है इट राइज ओनली इन वन डायमेंशनल स्पेस, दैट इज एच एक्स। ठीक है, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल स्टिल बी वन पर सिंबल टाइम, क्योंकि डायरेक्शन तो सिर्फ आपके पास एक ही है जहाँ पे सिंबल है। But in a 2x2 channel, you can very well check that there are actually 2 degrees of freedom per single time. सर W1 प्लस W2 जोन सा है, ये भी वेक्टर्स हैं, मतलब कि स्केलर जस्ट इंफॉर्मेशन है। हाँ, W वेक्टर्स होंगे ना, क्योंकि आप 2 एंटेनास पे ले रहे हैं ना इसको। जी सर। तो Y भी वेक्टर है, सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, H जो है वो L टाइम्स, अगर 2 एंटेना तो 2 का साइज होगा H का, वो इससे मल्टीप्लाई, ये भी एक वेक्टर बन जाएगा 2 के साइज का। यस सर। अच्छा, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई इसके 2x2 के 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब देखिए ना, एक तो H1 हो गया, X1 जो आपने भेजा उसके लिए आपको H1 मिल गया, X1 आपने फर्स्ट एंटेना से फंस कर भेजा। ठीक है ना, तो फर्स्ट एंटेना 2 रास्तों से पहुंचेगा फर्स्ट और सेकंड एंटेना को, उनको आपने H1 में डाल दिया। फिर आपने X2 भेजा, वो भी 2 डिफरेंट रास्तों से H2 पहुंचेंगे। ऑलराइट, सो इफ दे आर इंडिपेंडेंट, सिग्नल स्पेस डायमेंशन इज 2, बिकॉज 2 रास्तों से आपको सिग्नल आ रहा है। सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिट इन जे से जो आ रहा है वो अपनी डायरेक्शन को आएगा एच जे को, और रिसीवर जो है वो जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे तो बड़े आराम से उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है। So we can see that there is another degree of freedom in 2x2 channel। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास alright, so you can see this is your SIMO, it has only one channel, but you can see that in your MIMO you have actually 2 orthogonal channels, so you can send सर एक सवाल है। हाँ जी, तो सवाल ये है कि हमने देखा था लास्ट टाइम के जो सिंगल आउटपुट होती है, मल्टीपल इनपुट होती है, तो सर हम उसमें U1 को रिसीव कर लेते हैं और U2 को भी रिसीव कर लेते हैं। तो सर हमने उससे पहले देखा था कि जो माइसो होता है उसमें हम दोनों को ऐड भी करके एक ले लेते हैं। तो सर हम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, इससे हमारी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी गेन, 2 टाइम्स कोडिंग गेन, 2 टाइम्स डाइवर्सिटी गेन। सर हाँ जी,
सर वो हमारी नेक्स्ट क्लास एग्जैक्ट 2 पे है, सर ने लास्ट टाइम कहा था यार कि ठीक है चलें ठीक है. So I will end the lecture. This we will start from this point onwards. थैंक यू सर. All right, thank you.